Okay, let's start with the method of preparations. Now, for alkynes, the first method of preparation is your industrial method. How alkynes are prepared in industries. Okay. So in industry now, basically we are going to prepare mostly the acetylene. So industry may the first preparations, if you talk about an acetylene, is by controlled partial oxidation at high temperature. Okay, partial oxidation of methane. So you take methane and you partially oxidize it, okay, at high temperature. This reaction is taking place at high temperature. So suppose if you give in a methane of 6 moles of methane, CH4, plus 2 moles of oxygen, see partially it is being oxidized at 1772 Kelvin. So it is partially oxidized at a high temperature, 1773 Kelvin. So it results into the formation of what? This methane breaks and it forms 2 moles of HC triple bond CH acetylene, plus you will get 2 moles of CO2 plus 10 moles of hydrogen. This is partial. If you do complete oxidation of methane, it will give you CO and H2O. So we are not doing complete oxidation. We're doing partial at a high temperature. Okay. Because complete oxidation क्या हो जाएगा? That is called as combustion. So we are not providing combustion. We want an ethyne. And second method, industry mein, is what you do. You take calcium carbide. See, calcium carbide is given by CaC2. जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो. CaC triple bond C. This is CaC2. Okay. And this CaC2 is reacted with water. So you're reacting it with water. So when you do the hydrolysis of calcium carbide, see this part. You can see properly. I'm marking it here. See, this has been removed. So what is this? HC triple bond CH. Alkyne is removed. Matlab acetylene is removed. And what do you get? CaOH twice. Calcium hydroxide. So these are the two industrial method for the preparation of acetylene. Okay. If you take this calcium carbide. Now, remember something out of this. First you got it, na, guys? How to prepare it? Students. Yes, sir. Yeah. Or also remember one important point in this. If I take this beryllium carbide and react with water. Now beryllium is a group 2 element. Okay. Now if you remember this, if you take this beryllium carbide, write down here just for your information that Be2C is beryllium carbide. Now you react this with water. So what will happen? It result into the formation of beryllium oxide plus it will give you methane. So remember, beryllium carbide on hydrolysis gives methane. Calcium carbide on hydrolysis gives acetylene. Getting it? Students. And Yeah. also, if you take this magnesium carbide, Mg2C3, and react this with 4 moles of water,
it result into the formation of magnesium hydroxide. Okay, so you get this magnesium carbide you will get magnesium hydroxide plus this carbon, 3 carbon will convert into propyne, CH3C triple bond CH. So you get a propyne out of this. So this is your industrial preparation and some extra points. Okay, if you take beryllium carbide, you will get what? Methane. If you take magnesium carbide, you will get what? Propyne. Understood? Got it, guys? The first preparation. Students, I hope you understood this. Okay, I'll clear this up. Can I clear it up? Yes, sir. Okay. Now, if you talk about the second preparation here, the second preparation is dehydrohalogenation of, see, vicinal dihalides. So what is the meaning of, guys, vicinal dihalide? Vicinal dihalide क्या है? Come on, students. Students, what is vicinal dihalide? The vicinal dihalides are those halogens which are present on the adjacent carbon atoms. Do you remember that? Neighboring carbon atoms. These are vicinal. सेम कार्बन पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहालाइड्स. ओके, नाउ रिमेंबर, इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा कि व्हेन यू टेक अ विसिनल डाइहालाइड, सी, react this vicinal dihalide with, if you remember, for dehydrohalogenation we used alcoholic KOH in case of alkenes. If you study the alkenes properly, we use alcoholic KOH. So this is your alpha carbon atom. So from one of the carbon atom, initially, see, it is vicinal dihalide, the two halogens here. I'm putting two hydrogens also here. So initially what will happen, okay, when you react this with 1 mole of KH, from this carbon, if halogen is removed along with K, from the adjacent carbon atom, H will be removed along with OH. Okay, so here in this case, what you will get here, see, what is removed from here? Kx is removed, H2O is removed. So what you will get? CX double bond CH. Okay, so this is nothing but your, what is this basically? What you are getting here? You are getting a halide, but this halide is alkynyl halide, which is not so reactive. So what we will do to remove this halogen and convert into an alkyne, instead of adding alcoholic KOH, you will add more stronger base. Q. Remember, alkynyl dihalide, which is formed in the first step, is not very reactive. So alcoholic KOH, alcoholic NaOH, इतना काम नहीं करेगा. So what do? You take more stronger base like soda amide, NaNH2. ये ले ले. ठीक है, soda amide is a strong base, then this is stronger than what? KOH. So what will happen? Again, from here, if you see properly, this X with Na is removed. This H with NH2 is removed. So what is removed from here? NaX and also NH3. And what you will get?
finally you will get an alkyne out of this, that is C triple bond C. So try to remember, if you want to make an alkyne by dehydrohalogenation, in the first step you take alcoholic KOH, produce alkynyl halide, matlab alkene with halogen. In the second step, you don't take alcoholic KOH because this alkynyl halide which is formed is not so reactive. So you take more stronger base than that, like soda amide, potash amide, KNH2, which get rid of this XNH from the adjacent carbon atom and gives you an alkyne. See, I'll give you an example here. See this example. For example, if I take this molecule HCH, Br, CH, H and Br. So this is what 1,2 dibromoethane या ethylene dibromide. Okay. First step, you can react this with alcoholic KOH, no problem. You react this out. So what will happen? देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा? KBr. So KBr is removed. But from the adjacent carbon atom, what you will remove here? H2O. The bond will shift inside. In the first step, you will get it HCBr double bond CH2. This is your vinyl bromide. But again, vinyl bromide इतना reactive नहीं होता. तो फिर alkynes बनाने के लिए we use what? Soda amide, NaNH2. देख यहाँ से ये तेरा अल्फा, अब ये अल्फा अगर बन गया तो ये बीटा बन जाएगा, बिकॉज ये दिस वाज अल्फा, सो दिस वाज बीटा, मतलब एक को अल्फा लेगा तो दूसरा बीटा ही बनेगा ना. सो व्हाट इज रिमूव फ्रॉम योर सी? NaBr इज रिमूव फ्रॉम योर H and NH2 इज रिमूव. ओके, तो अभी H और NH2 निकल जा रहा है. सी, और द H इज रिमूव along with NH2. देखिए बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट हियर गाइस? You will get HC triple bond CH acetylene plus what do you get? NaBr plus NH3. Acha, you can carry out the reaction one step also. Only add NaNH2 2 moles. See, if I write down this reaction, matlab you can write down this reaction in this manner also. Like how can do this? You take this HCH Br CH H Br. Suppose if I use 2 moles of NaNH2. See, what will be removed from here? NaBr, NaBr, H with NH2, H with NH2. So finally you get what? HC triple bond CH plus 2 moles of NaBr plus 2 moles of what? NH3. So you can carry out the reaction using soda amide only. और फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH ऐड कर, लेकिन सेकेंड स्टेप में दोज अल्कोहलिक KOH वोंट वर्क मोर. व्हाई? बिकॉज अल्किनिल हैलाइड जो फॉर्म होगा that is like less reactive, so you require more stronger base, and more stronger base उससे ज्यादा कौन है? सोडा amide, NaNH2, which is called as soda amide. This is soda amide. We can also use what? Potash amide after this. अच्छा, अभी ये एग्जाम्पल देखो. सपोज इफ आई टेक दिस CH3CH क्लोरीन ले लेता हूँ, ClCHHCl 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ऑल्सो कॉल्ड एज इथिलीन डाइक्लोराइड. ओके, हम लोग ने कर चुके हैं यूपीएससी में. नाउ सपोज इफ आई एम यूजिंग अल्कोहलिक KOH, तो फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH ले लो. कम ऑन, व्हाट इज रिमूव फ्रॉम हियर? यू रिमूव अ Cl, it goes with K to form KCl. H is removed with OH to form what? H2O. तो सर KCl और H2O निकालो फर्स्ट स्टेप में. सो व्हाट यू विल गेट हियर? CH3C Cl double bond C HNH. Now what you will do here? You will add more stronger base, NaNH2. KNH2 भी ले सकता है.
So now what is removed from here? NaCl, and from here HNO, NH2. Ammonia is removed. This will shift inside. So what you will get here? CH3C triple bond CH plus NaCl plus NH3. Okay. So this is how you make a alkyne, by using dehydrohalogenation of vicinal dihalide. Got it, guys? Students. अब कोई बोला सर, what if we take a geminal dihalide? मैंने बोला बहुत सिंपल है. I'll clear this up. Okay, students, can I clear this up? See, what if I take a geminal dihalide? What is the meaning of geminal dihalide? Two halogen on the same carbon atom. See, if I take this CH3, Cl, NH. Suppose अभी मुझे ये react करना है. Do the same manner, do the same reaction. See, you use alcoholic KOH here. So when you use alcoholic KOH, what will happen? First step में chlorine और K, H and OH. ये निकल जाएगा in the form of what? KCl, in the form of what? H2O. So what you'll get here? HCH double bond C, H and Cl. Then what you will do? You will use more stronger base, NaNH2. So see what is removed? NaCl from here. You remove one H from here, so this bond will shift inside. So what you will get? HC triple bond CH plus NaCl plus NH3. See, again you're getting the alkyne. So it doesn't matter. You take geminal dihalide, you take vicinal dihalide, doesn't matter. Either you carry out a reaction by using only NaNH2, 2 moles, or you take 1 mole of KOH and 1 mole of NaNH2. Understood? Students. Any doubt in this? Okay. Now the third method of preparation is preparation of higher alkynes. See, the third method is preparing what? Higher alkynes. Using terminal alkynes. See this properly. Higher alkynes means more carbon atom. But किससे prepare करना है? From terminal alkynes. See, I'll give you a generalized reaction here. जी. If you talk about RC triple bond CH, this is your terminal alkyne. Always remember. Terminal alkyne always have one of the group as CH. Where this carbon atom, if you remember, Ifra blessing, this is sp hybridized. So if it's this sp hybridized, ना याद रखना मैंने सिखाया था sp hybridized मतलब this carbon is what? Acidic. It can lose hydrogen atom very easily. Okay. By reacting with a reactive metal, you are more stronger base if you react. So see, suppose if I react this molecule with LiNH3, with NaNH3, with KNH3, ठीक है, मतलब तुम इससे रिएक्ट कर लो लिथियम अमाइड से, या NaNH2 strong base, or KNH2 potash amide. So this hydrogen from here can be easily replaced. Why? Because acids are those which gives H plus ions, and alkynes in presence of stronger base or in presence of, याद रखना, in presence of stronger base
in presence of reactive metals, they act as acid. लेकिन कौन से alkynes? Terminal alkynes, which have CH group. So what will happen when they react with this? See, when they react with this, यहाँ से H निकल जाएगा with ammonia. So NH3 is removed and lithium goes to the place. So it forms RC triple bond C minus Li plus. Salt बनेगा. उस सॉल्ट को तू रिएक्ट कर किससे? RX से, अल्काइल हैलाइड से. So this is your alkyl halide. So see what is removed from here when you react this with alkyl halide. देखिए तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? LiX is removed. अगर सोडियम होता तो NaX निकल जाता. And what it forms? And this R goes to the carbon atom. It forms RC triple bond C R dash, higher alkynes plus LiX. So this is our higher alkynes are prepared from the method. I am giving an example here. See, you take this example RC triple bond CH. अब मैंने R की जगह देख क्या ले लिया? I'm taking an example here. For example, if I take this CH3C triple bond CH, मैंने देख किससे इसको रिएक्ट किया? LiNH3 नहीं, सपोज मैंने रिएक्ट किया इसको NaNH3 से. नो प्रॉब्लम सर, ये कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है. तो दिस H कैन बी रिमूव्ड along with ammonia. So what I'll get here? Ammonia is removed. Sodium उसकी जगह पे जाएगा. तो what you will get? CH3C triple bond C minus Na plus. Now suppose if I react this with चल मैंने इसको रिएक्ट कर दिया CH3Br से. तो तू क्या बोलेगी सर? NaBr is removed, CH3 जाएगा C पे. So what you will get here? CH3C triple bond C CH3. So you get a butane plus what is removed? NaBr. Got it guys? अभी देख मैंने ये एग्जांपल लिया एसिटिलीन से. अभी एसिटिलीन के पास में इट इज द मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल अल्काइन. व्हाई इट इज मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल अल्काइन? बिकॉज इसके पास में दो sp हाइब्रिडाइज CH ग्रुप है. तो सपोज यू रिएक्ट ओनली, सपोज मैंने इसको रिएक्ट किया विथ 2 मोल्स. चलो 1 मोल से पहले करता हूं मैं. 1 मोल ऑफ LiNH3 स्ट्रॉन्ग बेस. तो चल यहां से एक निकाल दे H, यहाँ से NH3 निकाल, सॉरी NH2 है तो NH3 निकल गया. सो व्हाट विल गेट हियर? HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस. अब एक काम कर, इसको रिएक्ट कर दे. चल सपोज मैंने इसको रिएक्ट कर दिया विथ इथाइल ब्रोमाइड. व्हाट इज इथाइल ब्रोमाइड? CH2 CH3Br. तो देख ये जो CH2 है इट विल गोज टू योर कार्बन एटम. सो व्हाट विल गेट? HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3. व्हाट इज रिमूव? LiBr. चल एक काम कर, इसको वापस रिएक्ट कर. LiNH2. क्या ये रिएक्ट करेगा? Yes, it will react. Why it will react? Again, can you see there is a sp hybridized hydrogen? So this hydrogen and NH2 is removed in the form of what? NH3. So what you will get here? Li plus C minus triple bond C CH2 CH3. Now what do you do? Again you react this with what? See, Li निकाल दिया. सपोज मैंने यही इथाइल ब्रोमाइड से इसको रिएक्ट किया. CH3 CH2Br. So what is removed from here? LiBr is removed. And finally देखो क्या मिलेगा यहाँ से? CH3 CH2C triple bond C CH2 CH3. See, this is your final product. मतलब you getting hexyne out of what? Acetylene. तो जो भी तू अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा ना उससे, वो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होता रहेगा but with terminal alkynes. Okay students, because terminal alkynes can liberate hydrogen. अब if you talk about, see, if you talk about this alkyne CH3C triple bond C CH3. See, in this alkyne can you see any terminal hydrogen? No.
There is no terminal hydrogen, no terminal CH group. Therefore, it is not acidic. If it is not acidic, no reaction. So reaction सिर्फ दे रहा कौन है? Only that alkyne which has what? CH group in it. C triple bond H. वही ये रिएक्शन देगा. सारे अल्काइंस ये रिएक्शन नहीं देंगे. Got my point here, students? Why? Because all these alkynes, they do not have these terminal CH. Terminal CH ही acidic है जो replace हो सकता है with metals. Clear, guys? Students, understood? Sure. Ifra, blessing. Got it? How to prepare higher alkynes? Always remember that whenever they react this CH वाला terminal, वो ही कर सकता है. बाकी जिसके पास नहीं है वो नहीं करेंगे. Only CH. अच्छा, करना कैसे है? First you have to convert this terminal alkyne into what? And salt, and then you react with alkyl halide. When you react with alkyl halide, you will get a higher alkynes out of this. Students, understood, no? Can I move on to the next part? Okay. Yes. Okay. Now, let's move on to the next part. The next part is chemical reactions of alkynes. Okay. चलो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग. प्रिपरेशंस हो गया अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक. Now, the first chemical reaction we want to prove is the acidic nature of alkynes. Okay. So let's talk about the first one. See, if you want to talk about acidic nature of alkyne, first you need to understand which alkynes are acidic. Okay, so remember, alkynes with terminal CH is acidic. पहले ये समझो, जिसमें टर्मिनल CH रहेगा ना, सिर्फ वही कंपाउंड एसिडिक होता है. क्यों? उसका रीजन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि टर्मिनल CH में you have RC triple bond CH where this carbon atom is what? sp hybridized. So ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ठीक है, and after pulling the electron it can release this RC triple bond C minus and release what? H plus ions, because sp hybridized carbon is more electronegative as compared to what? sp2 and sp3. Getting my point here? So we are talking about which alkyne, guys? Only terminal alkynes. Clear है ये? Students, I hope you're getting my point here. Ifra,
ठीक है. नाउ क्वेश्चन ये है कि how will you come to know the acidic nature? So remember, the acidic nature has been studied when these alkynes, they will release this H plus ions only if they are reacted with strong base and metals, reactive metals. अब तो बोलेगा सर स्ट्रॉन्ग बेस एंड रिएक्टिव मेटल्स. मैंने बोला हाँ. बोला यस. इफ यू टॉक अबाउट लिथियम, सी मैं एग्जांपल देता हूँ देखो. सी दिस इज योर RC ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, ये तेरा कौन सा अल्काइन है? टर्मिनल अल्काइन है. कैन यू सी SP है. अभी एक काम कर, तू इसको रिएक्ट कर. LiNH3, lithium amide, NiH2. So if I react this with lithium amide, what will happen? देख यहां से H निकल जाएगा, वो किसके साथ जाएगा? NH2 के साथ. So what you will get here? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस. C देख सॉल्ट बन गया प्लस NH3. और you can react this with what? NaNH2, soda amide. तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na plus NH3. You can react this with what? Potash amide. So RC triple bond C minus K plus NH3. You can react this with Cu2Cl2, cuprous chloride, जिसमें कॉपर का चार्ज +1 है. तो क्या मिलेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C Cu. ठीक है, अभी CCU जो मिलेगा ना, ये एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है. प्लस व्हाट यू विल गेट? व्हाट? HCl आउट ऑफ दिस. तो सी ये कैसा रिप्लेस करा? तू उसको सिर्फ सोडियम मेटल से रिएक्ट कर दे, सिर्फ सोडियम मेटल, नथिंग एल्स. तो देख फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा. RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस H प्लस इज रिलीज फ्रॉम हियर. तो मैं इसको H2 गैस से निकाल रहा हूं. तो यू टेक रिएक्टिव मेटल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? और यू टेक स्ट्रॉन्ग बेस, or you take cuprous chloride, terminal hydrogen will be released where they will act as what? Acids. Why? Because they have which carbon atom here? sp hybridized carbon atom. Getting my point here, guys? क्या ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि only that alkynes which have sp hybridized carbon atom can release hydrogen, isn't it, students? ठीक है ना? इफ्रा, ब्लेसिंग, अंडरस्टूड कि which hydrogen will be released sp hybridized. इसके लिए if I compare the acidic nature, always remember कि HC triple bond CH, this is most acidic as compared to what? CH3C triple bond CH, which is more acidic as compared to what? CH3C triple bond CCH3. ये तो होगा ही नहीं acidic. Why? Because यहाँ पर there is no CH group. If there is no CH, finished. एसिटिलीन सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है? बिकॉज एसिटिलीन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है गाइस? 2. दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं. व्हाई बोथ द हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस इजीली? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज बोथ द हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच्ड होते हैं, दैट हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? एसिडिक. अब तू उसको किससे भी रिएक्ट कर ले. मतलब अगर मैंने ये एसिटिलीन को सपोज इसको रिएक्ट किया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH को रिएक्ट किया, चल मैं रिएक्ट करता हूँ उसको LiNH2 से. देख पहले स्टेप में देखो क्या देगा यहाँ पर? NH3 निकल जाएगा. NH3 is removed from here. What will get? HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस. फिर उसके बाद में वापस से तू रिएक्ट कर ले इसको LiNH2. So again this hydrogen can be removed. So what do you get? LiC triple bond Cli plus NH3. See, you can replace both the hydrogen for acetylene, only for acetylene. Why? Because that acetylene is having what? Terminal CH. इसके लिए
This is your alkyne order. Now when you compare your acidic nature of alkynes with alkenes and alkanes, so obviously sp hybridized carbon is acidic. Therefore acetylene HC triple bond CH will be more acidic as compared to CH2 double bond CH2 will be more acidic as compared to CH3 single bond CH3. नोटिस कर, ये कार्बन क्या है sp, ये कार्बन क्या है sp2, ये कार्बन क्या है sp3. sp carbon is more electronegative because of greater s characteristic. मैंने पढ़ाया था S characteristic sp में 50% होता है. If you remember, this sp consists of 50% of s characters, which make them more acidic. Okay, so this is your first chemical reactions. That is nothing but the acidic nature of alkynes. I hope you all understood this, guys. Can I clear this up? Ifra, Ria, blessing. Okay, now let's talk about the second reaction. Second reaction, we have done this in alkane. This is very simple reaction if you remember. Hydrogenation. Okay, also in simple terms, reduction. If you remember, we take alkyne. ये हम लोग ने किया है preparation of alkanes में. You take RC triple bond CR alkyne. What do? You add 2 moles of hydrogen. याद है? In presence of platinum, palladium और मैंने बताया था ran and nickel heated. So these 2 moles of hydrogens are added across the triple bond one by one and it forms what? RCH. ये कर चुके हम लोग already alkanes में, preparations of alkanes में. But if you remember something कि if in this hydrogenation, ये भी मैंने आपको सिखाया था last video में alkenes में, if you use Lindlas catalyst, याद है Lindlas catalyst PD with CaCO3 in quinoline. Or you use liquid ammonia, lithium ammonia. So here in this case, when you do the hydrogenation in Lindlas catalyst or Birch reduction, याद है आपको only partial hydrogenation, only 1 mole of hydrogen is added across the triple bond. क्योंकि ये CaCO3 poisoning होता है, ये मैंने सिखाया था. So you add only 1 mole of hydrogen here, and what you will get here? RCH double bond CHR alkenes. So if you do partial reduction using Lindlas catalyst or Birch reduction, you will get alkene. If you directly use platinum, palladium, rhenium, nickel, you will get what? Alkane as the product. Hydrogenation. Okay. Now, third preparation is very simple. Third reaction is addition of what? Halogens, X2. So, बहुत simple है. If you talk about an alkyne, RC triple bond CR, and when you add a halogen to it, halogen is what? X2. So how they have been added? They will be added across the triple bond in presence of CCl4 as a solvent. तो देख, फर्स्ट स्टेप में ये halogen ऐड होगा, क्या बना देगा? RCX double bond CXNR. Then there is a double bond. You can add 1 more mole of halogens to it. चल एक और एक halogen डाल दे क्योंकि double bond है. So see, again X here, X here. So what you will get? RCX, XC, X, XNR. Isn't it? So what you will get here, guys? You will get what? Tetrahalide out of this. So tetrahalide लेके भी तू ये बना सकता है. Okay, addition of what? Halogen across the double bond. But obviously halogen जो add होगा, that will be added one by one to give a tetrahalides. Okay, triple bond will convert into single bond. And we are talking about which halogens? We are basically talking about chlorine and bromine because fluorination is very reactive, explosive, and iodination is extremely slow. अब देख इसमें एग्जांपल लिखता हूं मैं. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस एसिटिलीन HC triple bond CH.
प्लस यू ऐड व्हाट, सपोज मैंने ऐड किया इसमें ब्रोमीन, दिस इज योर ब्रोमीन Br2। तो फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। यू हैव टू सी ओनली द ट्रिपल बॉन्ड एडिशन, नथिंग एल्स, in presence of CCl4. So what you will get here? HCBr, double bond CBr and H. Now what do? You further in this, you further add bromine to it. तो चल अभी इसमें और Br2 ऐड कर दे in presence of CCl4। तो देख ये ब्रोमीन इस कार्बन पे जाएगा, दिस ब्रोमीन गोज टू दिस कार्बन। सो फाइनली तेरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HCBr, Br, CBr, Br and H, tetrahalides. So tetra halides can be generated by addition of halogens. You keep on adding halogen ना, जब तक कि तू ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट नहीं कर लेता है, सिंगल बॉन्ड। You keep on adding it. So when you keep on adding your tetra halides, what will happen? Halogens, the unsaturation triple bond will convert into a saturated single bond with 4 halogens attached at a time. तो कोई भी अल्काइन दिया हो, doesn't matter. You just focus on triple bond and add your halogen to make some tetrahalide. अभी ये टेट्राहालाइड में तू वापस जिंक डाल देगा। आपको याद है एक वन ऑफ द प्रिपरेशन, वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, डायहालाइड यूजिंग जिंक, विसिनल डायहालाइड यूजिंग जिंक, ZnCl2 निकल जाता है। वैसे ही वी हैव डन दिस इन अल्कीन। ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन यू टेक दिस टेट्राहालाइड्स, जो फॉर्म होता है टेट्राहालाइड्स, सपोज तूने इसके अंदर ऐड कर दिया एल्कोहलिक जिंक और हीट किया, देख ZnX2, ZnX2 निकल जाएगा। What will get? HC triple bond CH plus 2 moles of ZnX2। क्लियर है? ये अल्कीन्स में हम लोग ने किया था। अल्कीन्स में याद है डायहालाइड्स विद जिंक गिव्स यू एन अल्कीन, योर टेट्राहालाइड विद जिंक गिव्स यू एन अल्कीन, अल्काइन। ओके गाइस, अंडरस्टूड दिस रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन टेट्राहालाइड्स, रिमेंबर दीज पॉइंट्स। चल अभी नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, वी विल ऐड हियर addition of HX. Now what is HX? HX is your HCl, HBr, HI, HBr, HCl। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है इसमें? HI। ठीक है। सो व्हेन यू ऐड एन HI अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड, सी प्रॉपरली, जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं, देख C ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया मैंने, देख क्या ऐड किया मैंने? HX। ओके, सो व्हेन यू ऐड एन HX हियर, कीप दिस इन माइंड कि यहाँ तेरे को मार्कोनिकॉफ रूल्स अप्लाई होने वाला है। कैसे? देख तू नॉर्मली HX को ऐड कर दे फर्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्ड CX। ये देख, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर विनाइल हैलाइड। फिर तू फर्दर HX को ऐड कर, तो अब मार्कोनिकॉफ रूल लगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि फॉर एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, the negative part of the reagent goes to carbon having less number of hydrogen। तो you will get what? CH, यहाँ पर H आ जाएगा क्योंकि H यहाँ पर आ जाएगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, CXX। so you will get what? A डाइहैलाइड। अब ये जो तेरे को डाइहैलाइड मिल रहा है, ये कौन सा डाइहैलाइड है गाइस? इट्स अ geminal dihalide। Can you see this? Both the halogens are present on the same carbon atom। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया है? मार्कोनिक ऑफ रूल्स। याद है फॉर मेजर प्रोडक्ट मैंने सिखाया था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू कार्बन हैविंग व्हाट? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एग्जांपल देखो मार्कोनिक ऑफ रूल्स में, समझो मैंने ये एग्जांपल लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, चल इसमें ऐड कर दे तू, समझो HBr ऐड कर दे। देख, now this alkyne CH triple bond CH is a symmetrical alkyne।
तो H कहीं भी डाल, Br कहीं भी डाल, फर्क नहीं पड़ता. सो यू विल गेट व्हाट, HCH डबल बॉन्ड CH and Br. ठीक है. देन अब तूने एक तो एडिशन कर दिया. नाउ यू हैव टू डू व्हाट, सेकेंड एडिशन HBr का, क्योंकि डबल बॉन्ड है. चल अभी तू HBr अगर ऐड कर रही है, सो रिमेंबर यू फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल. कैसे? सी हियर देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, देयर आर टू हाइड्रोजन. हियर देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन. रूल क्या बोलता है मार्कोनिक? फॉर मेजर प्रोडक्ट add hydrogen to a carbon having less number of hydrogen. So guys, अगर बराबर नोटिस करोगे तो राइट पे देर इज वन हाइड्रोजन, लेफ्ट पे देर इज व्हाट, टू हाइड्रोजन. सो ऑब्वियसली मार्कोनिक के लिए द नेगेटिव पार्ट गोज टू अ कार्बन हैविंग व्हाट, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पर, H, तो H इधर चले जाएगा. HCH, Br, देख बन गया ना, 1,1 डाइब्रोमो इथेन. अब सिमिलरली सपोज इफ आई टेक दिस रिएक्शन, अब बोले कि सर दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अल्काइन, प्रोपाइन इज अनसिमेट्रिकल अल्काइन. सो इफ यू टेक प्रोपाइन एंड यू ऐड व्हाट, HBr टू इट, तो पहले ही स्टेप में मार्कोनिक लगेगा. व्हाई फर्स्ट स्टेप में मार्कोनिक? बिकॉज इट इज अनसिमेट्रिकल. Propine is unsymmetrical. Can you see on the left hand side there are two carbon and three hydrogen. Here there is only one carbon and one hydrogen, so it is unsymmetrical. सर फर्स्ट स्टेप में ही मार्कोनिक लगाना है. मींस मेजर प्रोडक्ट के लिए मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ. मैं यहाँ पर आई टेक एन HCl हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो नेगेटिव पार्ट इज व्हाट, गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो देख यहीं जाएगा क्योंकि here there are less hydrogen, Marconic rule, and H goes to what, C. So what do you get here? CH3C, Cl, double bond CH, H. Then उसके बाद में फिर तू HCl ऐड करेगा. So what will happen? Again Marconic लगा क्योंकि फिर ये अनसिमेट्रिकल है, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू अ कार्बन हैविंग बॉट लेस नंबर, H इधर आ जाएगा. So what will get finally? CH3C, Cl, Cl, and what, CH3C. You get what? Again a geminal dihalide, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. समझा कैसे HX को ऐड करना? अनसिमेट्रिकल है तो फर्स्ट स्टेप में ही मार्कोनिक लगा देना, सिमेट्रिकल है तो सेकेंड स्टेप में मार्कोनिक ऑफ रूल्स लगेगा. ठीक है, अंडरस्टूड? इफ्रा ब्लेसिंग दिया. ओके, नाउ I'll clear this up. Fifth, the last reaction is addition of water. Addition of HOH. ठीक है, by using 40% H2SO4 and 1% HgSO4, mercuric sulfate. Okay, when you use this reagent, देखते को जब भी ये reagent दिखा तो याद रख अल्काइंस में वाटर ऐड होगा और टॉटोमेरिज्म होगा. देख कैसा होगा, मैं तेरे को इसका एग्जांपल देता हूँ. टॉटोमेरिज्म, इफ यू रिमेंबर, वन ऑफ द आइसोमेरिज्म, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने सिखाया था आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म. तो सी द जनरल रिएक्शन गोज दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड C, you add what, HOH to it. ठीक है, चल H को डाल दे, अभी प्लस माइनस है तो मार्कोनिक ऑफ रूल्स लगेगा अगर ट्रिपल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल है. मैं दोनों भी बताऊंगा एग्जांपल. So H goes to one carbon, OH goes to another carbon. The entire reaction take place in presence of what? 40% H2SO4, 1% HgSO4. So what will happen? See, you get what? H, मैंने एक पे डाल दिया तो H, C, clear है? What will get here? Double bond C and a OH. अब देख सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा टॉटोमेरिज्म, शिफ्टिंग. सो हाउ इट विल टेक प्लेस, सी प्रॉपर्ली. देख ये पाई बॉन्ड को तू इस कार्बन पे शिफ्ट कर, एडजेसेंट कार्बन जो डबल बॉन्ड अटैच रहेगा ना. सी बेसिकली ये तेरा क्या बन रहा है, इनॉल.
पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर, this bond will shift inside and this hydrogen will goes to the carbon atom. 1,3 migration, ये मैंने सिखाया था. HCH, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड C, सॉरी डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O. सो ये तेरा क्या बन गया, आइदर अल्डिहाइड बन गया या कीटोन बन गया. So when you add a water to an alkyne, it will undergo tautomerism to give you either aldehyde or ketone. That is called as एल्डोइनॉल टॉटोमेरिज्म या कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. देख मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एसिटिलीन का. देख HC ट्रिपल बॉन्ड CH. चल एक काम कर, इसमें क्या ऐड कर दे, वाटर. सेम रिएजेंट्स ले. देख ये अल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल है, तो H कहीं भी डाल दे, OH डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी कार्बन पे. सो व्हाट यू गेट, HCH डबल बॉन्ड C OH. यहाँ पर क्या आ जाएगा, H. टॉटोमेरिज्म में कैसा शिफ्ट होगा, फर्स्ट पाई बॉन्ड ऑन द एडजेसेंट कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, H चले जाएगा इस C पे. सो व्हाट यू विल गेट फाइनली आफ्टर टॉटोमेरिज्म, HCH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. ये क्या बन गया, CH3CHO. CH3CHO इज कॉल्ड एज व्हाट, इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड. अब समझो तूने ये वाला लिया C प्रॉपर्ली, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन. अब प्रोपाइन में तू वाटर ऐड करेगी, सो प्रोपाइन इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन. देख प्रॉपरली, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. तो इन द सेम रिएजेंट यूज कर रहे हो, 40% H2SO4 और 1% H. So if you take 40% H2SO4, 1% HgSO4, but देखो फॉलो करना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल. क्यों मार्कोनिकॉफ रूल, बिकॉज अनसिमेट्रिकल है. तो अब तू क्या करेगी, वाटर में दो पार्ट होता है, positive negative. Negative is OH. So you add a negative part of the reagent goes to carbon having less number of hydrogen according to Marconi. So what you will get here, CH3C, देख OH डबल बॉन्ड CH2. अब तू क्या करेगी, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगी C पे हमेशा की तरह. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1,3 माइग्रेशन, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा. टॉटोमेरिज्म हो गया सर, मैंने बोला हाँ. So what you will get here, CH3C double bond O CH3. This is what, एसीटोन. इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, प्रोपेनोन. गॉट इट. हाउ विल डू टॉटोमेरिज्म, अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया, नो प्रॉब्लम, मार्कोनिक लगा दो. सिमेट्रिकल अल्कीन दिया, कहीं भी डाल दो, डजंट मैटर, बट यू हैव टू शिफ्ट दिस. क्लियर है ना स्टूडेंट्स. सी आई गिव यू वन मोर एग्जांपल आउट ऑफ दिस. देखिए एग्जांपल देख ले, थर्ड वाला. देख मैंने ये बनाया CH3C triple bond CCH3. अब this is a symmetrical alkene, so you add water to it. H किसी पे भी डाल दे, OH किसी पे भी डाल दे, फर्क नहीं पड़ेगा. In the presence of 40% H2SO4, 1% HgSO4. So what you will get here, CH3C H double bond C. चल मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, OH and this is what CH3. चल पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, कार्बन पे. ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा और ये H चले जाएगा इस C पे. टॉटोमेरिज्म हो गया. तो क्या मिलेगा देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ब्यूटेनोन. गॉट इट गाइस, एनी डाउट इन टिल योर स्टूडेंट्स. सो दिस कंप्लीट्स योर अल्काइंस का पार्ट. थर्सडे मॉर्निंग में एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, बिकॉज एरोमेटिक में यू आर अवेयर ऑफ बेंजीन, नैफ्थलीन, ऑल द IUPAC. यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ एरोमेटिसिटी. याद है कुछ हक्केल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. जरा रिवाइज करके बैठना. थर्सडे मॉर्निंग इज फाइन. इफ्रा ब्लेसिंग रिया. इफ्रा ब्लेसिंग रिया. थर्सडे मॉर्निंग इज फाइन. Yes, ब्लेसिंग रिया.